Assalamu alaikum. So now we are going to read the lesson number 2 from the English book Class Metric. The main title of this lesson is The Wise Caliph. Caliph Harun al-Rashid was very popular with his pupil. Caliph Harun al-Rashid पंहिंजे माण्हुनि में तमामु घणो मशहूर हो. He was very concerned about their problems and their welfares. हू उन्हनि जी भलाई ऐं उन्हनि जे मसइलनि जे बारे में हमेशह फ़िक्रमंद रहंदो हो या तमामु घणो फ़िक्रमंद हो. At night, he would disguise himself as a common man and go through the street of Baghdad. हिकु राति हू आम माण्हुनि जीअं पोशाक बदिलाए बगदाद जी गलियुनि में निकितो. He would mingle with the common peoples in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. हू सभ खां पहिरियां आम माण्हुनि सां मिलियो जंहिंमें उन्हनि जा मसइला ऐं मुश्किलातूं ॼाणियूं या हू जेको आहे आम माण्हुनि सां मिलणु लॻो ऐं उन्हनि जा मुश्किलातूं मसइला ॼाणणु लॻो. He was also known and respected for his justice and wisdom. हू पिणु ॼातो वेंदो आहे पंहिंजे अदल इंसाफ़ जे करे ऐं अक़लमंदीअ जे करे या उनखे इज़त नवाज़ी वई आहे पंहिंजे अदल ऐं अक़लमंदी जे करे. One day when he was holding a court, the Qazi brought two men before him. हिकु ॾींहुं जॾहिं हू पंहिंजो दरबार हलाए रहियो हो त काज़ी हुन वटि ॿ माण्हू आंदा. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. उन्हनि मंझां हिकु शख़्स जेको हो उनखे सुठी पोशाक पहिरियल हुई जेको हिकु इज़तदार शहरी नज़र अचे पियो जॾहिं त जेको ॿियो शख़्स हुयो उहो फाटल कपिड़नि में हो ऐं उहो फ़क़ीर नज़र अची रहियो हो. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. उन्हनि ॿिन्ही माण्हुनि सां गॾु हिकु अछो ख़ूबसूरत घोड़ो बि पिणु पेश कयो वियो. The Qazi approached the Caliph and said, Qazi ख़लीफ़े ॾांहुं अॻिते वधियो ऐं चयाईं, O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I have not to be able to settle. ओ सचाईअ जा सरदार, आउं वटि हिकु मसइलो आंदो आहे जेको आउं हल न आहियां करे सघियो. It is difficult case, इहो हिकु ॾुखियो केस आहे, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in a just and a fair manner. पर मूंखे यकीन आहे त अव्हां हिन मसइले खे सही तरीक़े सां पंहिंजी दानिशमंदी ऐं अक़लमंदी सां हल करे सघंदा. What is the dispute? asked the Caliph. छा मसइलो आहे, छा झगड़ो आहे? ख़लीफ़े पुछियो. These two men here are fighting over this horse. ही ॿ माण्हू हिते हिन हॉर्स ते विड़ी रहिया आहिनि यानी घोड़े ते विड़ी रहिया आहिनि. Each one of them claim and swear that this horse is his. उन ॿिन्ही मंझां हर हिकु दावा करे रहियो आहे ऐं कसम खाई रहियो आहे त हीउ घोड़ो मुंहिंजो आहे. Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. अॻियां वधी करे वेल ड्रेस्ड माण्हू खे जेको आहे ख़लीफ़े चयो त तव्हां अॻियां वधी अचो ऐं तव्हां ॿुधायो त तव्हां छा था चवणु चाहियो या तव्हां वटि चवण जे लाइ कहिड़ा अल्फाज़ आहिनि. The man said, the Caliph, O leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. ओ सचाईअ जा सरदार और रहनुमाई जा सरदार, मां अव्हां खे गुज़ारिश कयां थो त तव्हां मूं ते यकीन कयो. मां अव्हां जी मौजूदगी में जेको बि चवंदुसि सच चवंदुसि. This morning, when I was riding through the city, I saw this beggar limping along ahead of me. जॾहिं अॼु सुबुह जो मां शहर ॾांहुं सवारी करे रहियो हुअसि त मां हिन फ़क़ीर खे पंहिंजे अॻियां मनखाईंदे ॾिठो. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me to stop. मुंहिंजे घोड़े जे खुरनि जो आवाज़ु ॿुधी करे हू पोइते मुड़ियो ऐं इशारो कयईं मूं ॾांहुं बीहण जे लाइ. I pulled the rein of my horse. मां पंहिंजे घोड़े जी लगाम खे छिकियो. He begged me to give him a ride up to the city gate. हुन मूंखे गुज़ारिश कई त मां हुनखे शहर जे गेट ताईं सवारी ॾियां. He was lame, हू मंडो हो. I feel sorry for him. मां हुन जे लाइ अफ़सोस कयो. So I pulled him
up behind me on the horse मूं हुनखे पंहिंजे पुठियां हथ मां वठी करे या छिके करे घोड़े ते विहारियो. When we reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. जॾहिं असीं शहर जे गेट ताईं पहुतासीं त मां पोइते मुड़ियसि उन जी मदद करण जे लाइ हेठि लहण में. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. उन हेठि लहण खां इनकार कयो. I was puzzled. मां परेशान थियसि ऐं उनखे नरमीअ सां वरी चयो त पाण शहर जे गेट ताईं पहुची विया आहियूं, अवां हेठि लहो. He not only refused to get down, उन सिर्फ़ु हेठि लहण खां इनकार न कयो. Instead, he claimed that the horse belongs to him. उन जे बदिरां उन इहे दावा कया त हीउ घोड़ो हुन जो आहे. He said that he had given me a ride and instead of being grateful. हुन शुक्रिया अदा करण जे बदिरां हुन ईअं चयो त मां हुन मूंखे सवारी ॾिनी आहे. I was robbing him of his horse. मां उन खां उन जो घोड़ो फरे रहियो आहियां. The caliph then turned to the man in rags. पोइ ख़लीफ़ो उन शख़्स ॾांहुं मुड़ियो जंहिंखे फाटल कपिड़ा पारियल हुआ या फ़क़ीर ॾांहुं मुड़ियो and said what you have to say. ऐं चयाईं तव्हां छा था चवणु चाहियो. The beggar limped forward and said. फ़क़ीर अॻिते वधियो मटकाईंदे ऐं चयाईं O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. ओ सचाईअ जा सरदार, तव्हां मददगार ऐं रहनुमा आहियो ग़रीबनि जा. You are a wise and just caliph. तव्हां इंसाफ़ ऐं अक़लमंद ख़लीफ़ा आहियो. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. मूं ते रहम कयो ऐं मूंखे हिन शहरी जे ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी खां बचायो. I swear that this horse belongs to me. मां कसम थो खणां हीउ घोड़ो मुंहिंजो आहे. You must be thinking like everyone else in this court. तव्हां लाज़मी सोचे रहिया हूंदा जीअं त हर को हिन दरबार में सोचे रहियो हूंदो. How a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. कीअं मूं जहिड़ो हिकु फ़क़ीर अहिड़ो घोड़ो ख़रीद कंदो ऐं रखी सघे थो. Let me tell you that it is because of this horse that I am in rags. मूंखे तव्हां इहो ॿुधाईंदो छाकाणि त मां हिन घोड़े ते फाटल कपिड़नि में आहियां. Whatever money I had, जेके बि मूं वटि पैसा हुआ, I spent on this horse. मां हिन घोड़े ते ख़र्च करे चुको आहियां, करे छॾिया आहिनि. This morning as I was coming to the city on my horse. अॼु सुबुह जो जीअं मां घोड़े ते पंहिंजे शहर ॾांहुं अची रहियो हुअसि. I noticed this man walking along the road. मां हिन शख़्स खे रोड जे भरिसां घुमंदे ॾिठो. When I came close to him, जॾहिं मां हुन जे नज़दीक आयुमि, he stopped me and requested me to lend him my horse. हुन मूंखे गुज़ारिश कई त मां हुनखे पंहिंजो घोड़ो उधारो ॾियां. For he was in great hurry to reach the city. उनखे शहर ॾांहुं पहुचण जे लाइ जल्दी आहे इन लाइ. Of course, यकीनन I could not lend my horse to a complete stranger. मां मुकमल हिकु अजनबी खे पंहिंजो घोड़ो न ॾिनो. यकीनन मां जेको आहे हिकु मुकमल अजनबी शख़्स खे पंहिंजो घोड़ो न ॾिनो. Could I, however, उन जे बदिरां I decided to help him. मां हुन जी मदद करण जो फ़ैसिलो कयो and let him ride on my horse. मां हुनखे पंहिंजे घोड़े ते सवारी ॾिनी. While I sat behind him, जॾहिं मां हिन जे पुठियां वेठसि, as we reached the city gate, जीअं असीं शहर जे गेट ताईं पहुतासीं, he asked me to get down. हुन मूंखे चयो हेठि लहो. And gave the horse to him. ऐं घोड़ो हुनखे ॾियां. He said that such a fine horse should not belongs to a beggar. हुन ईअं चयो त हीउ जेको सुठो घोड़ो आहे ग़रीब जो या ग़रीब सां नथो ठहे. He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. हुन मूंखे हुकुम ॾिनो त हेठि लहण जे लाइ, न त जेको आहे हू मूंखे ज़बरदस्ती हेठि लाहे सघे थो. He further said that even if I shouted for the help, हुन वधीक ईअं चयो त जेकॾहिं मां रड़ियूं कंदुसि या मदद जे लाइ आवाज़ु कंदुसि, no one would believe that such a fine horse could belongs to someone like me. को बि मूं ते यकीन न कंदो त अहिड़ो सुठो घोड़ो मूं जहिड़े फ़क़ीर या ग़रीब जो थी सघे थो. They would only make fun of me. उहे सिर्फ़ु मुंहिंजूं मज़ाकूं ठाहींदा या मूं ते टोकूं ठाहींदा. Now mighty and honorable caliph, हाणे ईमानदार ऐं इज़तदार ख़लीफ़ा, I beg you to save me. मां तव्हांखे गुज़ारिश थो कयां मूंखे बचायो from the robber and give me back my horse. हिनी फ़ौरू खां ऐं मूंखे पंहिंजो घोड़ो वापसि करियो.
I think this case is not very difficult to solve, said the caliph to the qazi. मां सोचां थो त हीउ जेको केस आहे ॾुखियो न आहे हल करण में. ख़लीफ़े काज़ी खे चयो, It can be decided in a minute. इहो हिकु मिनट में हल करे सघिजे थो. Tell these men to place their hands on the horse one by one. इन्हनि माण्हुनि खे ॿुधायो त तव्हां हिकु हिकु थी करे घोड़े ते हथु रखो. Let the beggar do it first. फ़क़ीर खे पहिरियां रखणु ॾियो या फ़क़ीर खे पहिरियां जेको आहे चयो. When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. जॾहिं हुन उन्हनि खे हथु लाथो त घोड़ो ईअं हिणकियो छिरकियो जीअं हुन जेको आहे हुन यात्राउनि खे पसंदि न कयो. Next, the rich man was asked to touch the horse. पोइ जेको आहे अमीर शख़्स खे घोड़े खे छुअण जे लाइ चयो वियो. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. अमीर शख़्स जे टच करण सां घोड़ो ख़ुशीअ सां हिणकियो ऐं फुड़ाट खयाईं. This horse belongs to him, pronounced the caliph. ही घोड़ो इन जो आहे. ख़लीफ़े ऐलान कयो. Give the horse to its master. इहो घोड़ो उन जे मालिक खे ॾियो. Then the caliph turned to the beggar and said, पोइ ख़लीफ़ो फ़क़ीर ॾांहुं मुड़ियो ऐं चयाईं, You are a liar and a wicked man. तूं कूड़ो ऐं हिकु ज़ालिम इंसान आहीं. You tried to rob an honest and a respectable citizen. तूं हिकु इज़तदार ऐं ईमानदार शहरी खे फणण जी कोशिशि कई. You deserve severe punishment, but I shall merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman here. तूं हिन जेको आहे ईमानदार ऐं इज़तदार शहरी खे फणण जी कोशिशि कई. तव्हां जेको आहे सख़्तु जेको आहे सज़ा जे लाइक़ु आहियो, पर मां तव्हां ते रहम करे सघां थो. जेकॾहिं तव्हां हिते हिन वक़्तु हिन शख़्स खां हिन इज़तदार शहरी खां माफ़ी वठंदा त. The beggar realized that he had been caught red-handed. फ़क़ीर हाणे इहो महसूसु कयो त मां त बिल्कुलु ई हाणे पकड़जी चुको आहियां. Immediately turned to the rich man and said, हू यकदमि ई या जल्दी सां उहो उन अमीर शख़्स ॾांहुं मुड़ियो ऐं चयाईं, Please forgive me. महिरबानी करे मूंखे माफ़ु कयो. I have been ungrateful. मां नाशुक्रगुज़ार थियसि. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift. चए त उन जे बदिरां जो तव्हां मूं ते रहम कयो ऐं मूंखे सवारी ॾिनी. I lied and claimed that the horse belongs to me. मां कूड़ हयो ऐं मां इहे दावा कया थी घोड़ो मुंहिंजो आहे. The rich man, being a kind-hearted and generous person, अमीर शख़्स हिकु वॾी दिलि सां या ख़ुशि दिलीअ सां उन शख़्स खे माफ़ु करे छॾियो. Ready to forgive the beggar. हू उन फ़क़ीर खे माफ़ु करे छॾियो या माफ़ु करण जे लाइ बिल्कुलु ई तयारु हो पहिरियां खां. Not only that, he took out हुन सिर्फ़ु ईअं न कयो. He took out his purse and gave him a handful of gold coin. हुन पंहिंजो पर्स ॿाहिरि कढियो ऐं उन खे मुठ भरे जेको आहे सिकनि जी ॾिनई. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. हर हिकु उन दरबार जे अंदरि अमीर शख़्स जे उन अमल खे ॾिसी करे तमामु घणो हैरान थी वियो.